जय जगन्नाथ, जय श्रीराम, पायल, विनय, सिक्की, सुजीत, क्षितिज, सुप्रिया, दीपांजलि, अंकिता। ठीक अच्छे, जल्दी जल्दी समस्त पलि आस एंड इमिडिएटली अब स्टार्ट करिया। जो पिला माने ऑलरेडी हमर आसीना 21 वाचिंग। जय जगन्नाथ सौम्याश्री, जय जगन्नाथ टू एवरीवन। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो एंड इमिडिएटली 50 हबो तो स्टार्ट करिया। तमर 7टा क्लास होची एंड हमर क्वेश्चन भी अल्प अछि, सो डोंट वरी, सॉरी जीव एंड सब जगह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड तुम थंबनेल ले देखि परथिबो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन पार्ट 2। ऑलरेडी हमें पार्ट 1 डिस्कशन करि सारछे, तो एटा हमर पार्ट 2 तुम पाइबो। सूर्य चंद्र गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो 50 हबो माने इमिडिएटली स्टार्ट करिया, जस्ट 2 मिनिट रे 50 हे जिवो एंड हम संग संग करिवा। ठीक अछि, तो चलो एंड 7टा तुम क्लास अछि, ता पूर्व सरी हेतिबो, डोंट वरी। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। अंजलि, श्रुति, शिवानी, राधा माधव सर, OUT 2023 क्वेश्चन पेपर कोड मिलो। OUT 2023 क्वेश्चन पेपर हमें डिस्कशन कर दवा नेक्स्ट क्लास रे, कोन अछि। गुड इवनिंग स्वयं, डोंट वरी प्रज्वल, हमें नेक्स्ट क्लास रे ही डिस्कशन कर दवा OUT 2023 रो क्वेश्चन, डोंट वरी। सूर्य चंद्र जल्दी शेयर करो, 32 वाचिंग एंड 50 हबो तो स्टार्ट करिया। ठीक अछि, मितु, दीपांजलि, स्वयं, गायत्री, अंकिता, सौम्याश्री, पायल, सुप्रिया, दीपांजलि, नमस्ते अनिता। स्टार्ट करो। ठीक अछि, तो चलो हमें स्टार्ट कर दवा। बेसिकली 40 वाचिंग तो पिला जॉइन होउछथि एंड हमें स्टार्ट कर दवा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को वेलकम करिवा। तो जनरली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज करेक्ट। एक नंबर क्वेश्चन एंड बढ़िया से पढ़ो, क्वेश्चन इजीली हे जिवो एंड इजी क्वेश्चन पूरा पढ़ो एक भल से। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम एनालिसिस करके या पाई परिबा, दैट इज क्वेश्चन रो पैटर्न केमति पडुछ एंड को लेवल रो क्वेश्चन पडुछ। हम तो एक्सपेक्टेशन रखियानी कि टोटली पर टू द पॉइंट एटा कॉपी एंड पेस्ट करके थुआइतिबो, बट हमें इमेजिन लगे परिया कि एई भलिया क्वेश्चन पचारछि, तो नेक्स्ट ईयर हम टारगेट करि परि एई भलिया क्वेश्चन आसीबो बोली। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीएज कैन बी यूज्ड टू रिमूव द आरएनए। प्रोटीएज टा कोन आरएनए को रिमूव करे भी यूज करा जाय, प्रोटीन को रिमूव करे यूज करा जाय। देन पचारछि कि को स्टेटमेंट टा दैट इज करेक्ट। कौन आंसर, श्रद्धा, किटू, अर्चिता, तृप्ति, ए कोटा करेक्ट पचारछि। ए केमति हबो, करेक्ट पचारछि व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज करेक्ट। देन डीएनए इज फ्री विदिन द सेल मेम्ब्रेन एंड इजी टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स। ना सेलुलोज इज एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द फंजी, फंजी द्वारा तो दैट इज काइटिनेज। एटा भी नो, एटा भी नो। The genes are found in the long DNA molecule that are intertwined with a protein like histone. एटा तो ठीक लागुची, बट DNA is free within the cell membrane. DNA टा कोन ओटा सेल मेम्ब्रेन रे फ्रीली मिलुची। DNA टा हम कहि पारे न्यूक्लियस भीतर मिलुची एंड फ्रीली भी मिलुनी। DNA सो RNA अछि एंड प्रोटीन भी मिलुची। ताले कोन आंसर, ऑप्शन दैट इज डी। दिस इज द परफेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एट तो मैं इमेजिन करि परतो प्रोटीएज अछि माने हम ऑलरेडी पढितले बायोटेक्नोलॉजी रे, दैट इज जदि हमें जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस रे पढितले, जदि हम गोटे डी जीन ऑफ इंटरेस्ट और डिजाइन जीन रिक्वायर्ड अछि, तले हमें फर्स्ट कोन अछि ना त सेल वॉल को डाइजेस्ट करिया अछि। इफ इट इज द प्लांट सेल हमें सेलुलोज दबा, एंड इफ द इट इज फंगस सेल काइटिनेज दबा, एंड इफ द बैक्टीरिया सेल वॉल दैट इज मेड ऑफ एपिडोग्लाइकन तले हमें लाइसोजाइम दबा। देन हमें न्यूक्लियस भीतर एंट्री करिया, देन डीएनए को एक्सट्रैक्ट करिया। तो दिस इज अ डी। तो सेलुलोज एटी भूल हैला, ई भूल हैला, डीएनए टा फ्रीली मिलेनी, सेल मेम्ब्रेन रे पुण देछि। चलो यस सर, सार्थक 41 वाचिंग, जल्दी जल्दी शेयर करो एंड 50 करो। देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एनिमल लिस्टेड बिलो इज नॉट ए सिलोमेट। बढ़िया क्वेश्चन, को कौन अब आंसर, व्हिच एनिमल लिस्टेड बिलो इज नॉट ए सिलोमेट। ए क्वेश्चन ऑलरेडी करछे। सिलो मींस बॉडी कैविटी, को फाइलम रो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट ताको कहा जाय दैट इज द सिलोमेट एनिमल। एंड इफ द बॉडी कैविटी इज फॉल्स बा फॉल्स बॉडी कैविटी दैट इज स्यूडोसिलोमेट, एंड इफ द बॉडी कैविटी एब्सेंट दैट इज कॉल्ड एज एसिलोमेट। एंड हम जानि छे बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, बॉडी वॉल एंड द गट वॉल भीतर हमर रहिला दैट इज कोन ना सिलोम बा कैविटी जदी रहिबो हमें ताको कोन कहबा ना सिलोम। ताले क्वेश्चन पजे व्हिच इज नॉट ए सिलोमेट, कोन अब आंसर ए। समस्त का आंसर ए एंड द परफेक्ट आंसर दैट इज ए। एसिलोमेट दैट इज स्यूडोसिलोमेट, ASCII helminths that is pseudosilomet.
ठीक अच्छी दैट इज सीडो सिलोमेट परफेक्टली एंड मन रखिया पे भी इजी सीडो आस्की रिलेट कर परिबो सीडोटा गोटे पढ़िया पे केमति लागुची सीडो सिलोमेट आस्की एलिमिथेस तो ओनली एंड ओनली सीडो सिलोमेट होचे आस्की एलिमिथेस एंड स्ट्रिक्टली मन रखिया पड़िबो आस्की एलिमिथेस टा माय क्वेश्चन इज आस्की एलिमिथेस इज राउंड वर्म रिंग वर्म what type of worm a ring worm na round worm na flat worm ascielmithes which type of worm is ascielmithes a round worm a ring worm na flat worm कौन होगा सोयम बढ़िया दैट इज ascielmithes pseudocoelomate कौन होगा ascielmithes are round worm or ring worm or that is flat worm round worm sarthak lipica that is ascielmithes are round worm and platyhelminthes or flat worm and the annelida that is the ring worm so here answer is ascielmithes that is not a coelomate but coelomatic animal no it is pseudocoelomate chalo then ei bhitru ko which phylum is the largest phylum ascielmithes mollusca echinodermata and arthropoda which phylum is largest phylum kon answer which phylum is the largest phylum lipica perfect that is arthropoda is the largest phylum nice then mate ko which of the following phylum ei jo phylum bitru kahara that is kiye both symmetry show kariye that is radial symmetry and bilateral symmetry both type of symmetry kiye show kariye kon answer ba which phylum show both of the symmetry radial symmetry and as well as bilateral symmetry kon hobo एकाइनोडोमाटा परफेक्ट एकाइनोडोमाटा फाइलम टा जोटा रहिला दैट इज तार लार्वा टा शो करिवो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लार्वा शो करिवो बायलैटरल सिमेट्री एंड एडल्ट शो करिवो दैट इज रेडियल सिमेट्री इंपोर्टेंट एटा मन रखिवो पडिया क्वेश्चन एटा जस्मिन इमोसर्स रेडी चलो देन होची आ भीतर को व्हिच फाइलम इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम तो आर्थ्रोपोडा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कोटा मोलुस्का ascielmithes pseudocoelomate and round worm then echinodermata रे both symmetry आ भितर को which phylum spiny bodied कहार ए जो फाइलम रहिले आक भितर कहार बॉडीटा स्पाइनी बॉडी बा कंटा कंटा बॉडी गुड इवनिंग सर सॉरी फॉर लेट ऑडियो इट्स ओके सार्थक अक्सा गुड इवनिंग लिपिका echinodermata स्पाइनी बॉडी बा कंटा कंटा बॉडी कहार एंड आंसर इज दैट इज echinodermata ठीक अछि तापर को मु तीटा एग्जांपल कहूची एग्जांपल कहार पिल्ला एप्पल स्नेल पिंकटाडा पॉल ओस्टर सेपिया कटल फिश लोलिगो स्क्विड ऑक्टोपस डेविल फिश दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हिच फाइलम आउतरे सुनो पिल्ला एप्पल स्नेल पिंकटाडा पॉल ओस्टर सेपिया कटल फिश लोलिगो स्क्विड ऑक्टोपस डेविल फिश दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हिच फाइलम answer the perfect answer that is the mollusca right then give me an example of echinodermata रो दीटा example दियो just anyone echinodermata phylum रो दीटा example just कोन कहबो मु गोटे कहि दोची Asteraceous starfish Echinus sea urchin Cucumaria sea cucumber Ophiura brittle star these are the example of echinodermata चलो next which of the following is not a peptide hormone but which of the following option is not a proteinaceous hormone proteinaceous hormone किए नुह या भितरु कोन आंसर स्टारफिश सी लिली बढ़िया मोलस्क लाइफ ऑफ किरण लिपिका दैट इज सी ओएस्ट्रोजेन दिस इज द स्टेरॉयडल हार्मोन ठीक अछि स्टेरॉयडल हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन गैस्ट्रिन इंसुलिन मते को एरिथ्रोपोएटिन इज ए हार्मोन व्हिच इज रिलीज फ्रॉम व्हिच ऑर्गन एरिथ्रोपोएटिन टा कोड रिलीज हुए कोन आंसर एरिथ्रोपोएटिन इज रिलीज फ्रॉम निवेदित वॉइस ऑफ कृष्णा अनीता अंकिता कोगी एरिथ्रोपोएटिन इज रिलीज फ्रॉम व्हिच ऑर्गन एरिथ्रोपोएटिन कोन आंसर एनीवन ग्रेसफुल गसिप echinodermata किछ प्रीवियस क्वेश्चन तम मानको तो चलची स्वयं किडनी लिपिका किडनी दैट इज एरिथ्रोपोएटिन इज रिलीज फ्रॉम किडनी ठीक अछि चलो देन गैस्ट्रिक
हेलो 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 शुणा होची आवाज आसी हाँ सर आसला सो आम समस्ते थैंक यू कह पिंकू भाई को जो संभव होती सडनली टिके टेक्निकल इश्यू जो करेंट प्रोब्लेम है बोली पलैला दैट इज सागे सागे एंड टिके लाइट भी टिके कम हो बट इट्स ओके क्वेश्चन डिस्कशन करे किसी प्रोब्लेम हेनी पिंकू भाई की जय पिंकू भाई की जय आ ये जहाँ भी लाइव सेशन होची एंड जहाँ भी सब पीपीटी होची एंड ये थंबनेल होची एंड जो तुम शेड्यूल होची आ जहाँ भी टेक्निकल इश्यू होची से सब पिंकू भाई ही या रेस्पॉन्सिबल एंड पिंकू भाई सब काम कर सो आम थैंक यू कह दरकार थैंक यू पिंकू भाई थैंक यू सो मच पिंकू भाई चलो तो क्वेश्चन कौन हम क्वेश्चन नंबर 4 कॉलम 1 एंड कॉलम 2 फिब्रिनोजेन बासोफिल्स पेरिकार्डियम एंड एंजिना तो दैट इज कॉलम ए एंड कॉलम 2 जोड़ियार अच्छी कौन हम परफेक्ट आंसर आई थिंक आसो इजी क्वेश्चन अच्छी पायल शुभलक्ष्मी अंकिता तो एबे जो 23 पिला अच्छी से पिला ही दैट इज पूरा कंप्लीटली डेडिकेटेड अच्छा जहाँ जना पड़ जाऊँगी तो चलो तो फिब्रिनोजेन हम जानी द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ फिब्रिनोजेन इज दैट इज क्लॉटिंग एंड कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बासोफिल्स secrete serotonin heparin and angina that is acute chest pain and pericardium that is the membranous sac मन अच्छे आम गोटे कही कि जदि एंजिना होची बा चेस्ट पेन होची एंजिना पेक्टोरिस बा जदि कौन लोकर चेस्ट पेन होची एंड तुम मैंने देखुच तो सही टाइम रे जदि मेडिकल दूर अच्छी तो कह जाए कि तुम जनराली जदि अदा रस को इमिडिएटली छेचिकी दवाई एपाई कह जाए अदा रस छेचिकी दवाई कारण तो अदा रस नाइट्रिक ऑक्साइड बा एनओ थाए जोटा हूँ कौन हुए ना जो आर्टेरीटा आम ब्लड सप्लाई करे से ब्लकेज हो ओपनिंग करदे डाइलेशन ऑफ द ब्लड वेसल रे हेल्प करे एंड ऑल्सो भी कह जाए कि दुटा टैबलेट पाखे रखे आस्पिरिन एंड सॉर्बिट्रेट तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम बढ़िया अच्छी सदा किटू फाइनल आंसर बी ऋतिक आक्सा सौदामिनी अभिस्मिता मीटू बढ़िया चलो व्हिच कंपाउंड इनिशिएट ग्लाइकोलिसिस इन द प्लांट सेल रे फ्रुक्टोज ग्लूकोज राइबोज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट व्हिच इज रेस्पोंसिबल टू इनिशिएट द ग्लाइकोलिसिस इन द प्लांट सेल कौन हम आंसर ग्लूकोज स्वयं परफेक्ट अच्छी आंसर ग्लूकोज बढ़िया दैट इज ग्लाइकोलिसिस कौन ग्लाइकोलिसिस दैट मीन्स लिसिस मीन्स स्प्लिटिंग एंड ग्लाइकोलिसिस मतलब दैट इज द ग्लूकोज रो स्प्लिटिंग आम कहीपर ग्लाइकोलिसिस कौट हुए तुमको फास्ट क्वेश्चन सेल भितर दिस इज द सपोज दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म और द माइटोकॉन्ड्रिया एनीवन ग्लाइकोलिसिस कौट हुए ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल और द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल कौन आंसर दैट इज परफेक्ट साइटोप्लाज्म राइट Glycolysis occurs in cytoplasm of the cell and strictly मन रखिबो cytoplasm is the semi fluid like structure और आम कहि पारा cytoplasm is the main area where is the maximum cellular activity takes place then cytoplasm रे हमरो glycolysis हुए glycolysis रे that is कोन हुए ना ग्लूकोज टा कन्वर्टेड हुए to pyruvic acid and glycolysis otherwise called as EMP pathway by the discovery of the 3 scientists Emder, Merope and Parnos chalo ready cytoplasm then next question where is the Krebs cycle occur Krebs cycle कोट हुए option 1 cytoplasm option 2 matrix of mitochondria option 3 that is the inner membrane of mitochondria कौन हबो where is the Krebs cycle occur स्वयं अक्सा गायत्री अंकिता graceful gossip voice of Krishna that is matrix of mitochondria how many steps are there in glycolysis रे generally केतरा step थाए 4 5 6 10 how many steps are there in glycolysis कौन आंसर 10 दुर्गेश सिंह 10 अच्छा मते को in which step that is the ATPG utilized option दोची ग्लूकोज 1 रो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ना ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू ग्लिसरल्डिहाइड 1 3 20 फॉस्फेट रू 3 फॉस्फेट को स्टेप रे दैट इज एटीपी रे यूटिलाइज हुई ग्लूकोज टू ग्लूकोज 1 6 चलो
ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट fructose 1,6 20 फॉस्फेट ए दीटा स्टेप जोटी रहउछ दैट इज एटीपी रो यूटिलाइज हुए नेक्स्ट क्वेश्चन चलो द बॉडी प्लेन ऑफ डैश आर रेडियली सिमेट्रिकल कौन हम रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी प्लेन कहार रेडिकली लिखाई दैट इज रेडियल सिमेट्री बोली भाव कौन हम आंसर एनिलिडा ना स्पंज ना आर्थ्रोपोडा ना एकेनोडर्म्स रितिका ग्लूकोज 1 to glucose 6 phosphate and fructose 6 to fructose 1,6 20 phosphate ए दीटा स्टेप जोटी हमर जनरली कोन हुए ना एटीपी इज यूटिलाइज्ड चलो देन कोन हो आंसर एकाइनोडोमाटा श्रद्धा की 2 दैट इज द बॉडी प्लेन्स आर एकाइनोडोमाटा राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल लैक द मेम्ब्रेन और हमें कहि पेरा द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आ भीतर किए ऑलरेडी हमें कहि छे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किए ताले आंसर कोन हबो ऑप्शन डी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड 7 नंबर डी सेंट्रोजोम हबनी कि देखो आमे जानि से कोन डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सब किए न्यूक्लियस एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कहि परिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सब किए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी लाइसोजोम एंड वैक्यूल एमान होचन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किए एनआरआई कोटा सी न्यूक्लियोलोस राइबोसोम इंक्लूजन बॉडी दैट इज सेंट्रोजोम न्यूक्लियोलोस राइबोसोम इंक्लूजन बॉडी सेंट्रोजोम ताले आंसर कोन हबो सेंट्रोजोम भी हबो न्यूक्लियोलोस भी हबो ठीक अछि सेंट्रोजोम एंड न्यूक्लियोलोस सार्थक परफेक्ट राइट आंसर न्यूक्लियोलोस एंड द सेंट्रोजोम लिपिका बोथ ए एंड डी रुबिसा बढ़िया बोथ ए एंड डी काना ए डी बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तापर मते को ए जो ऑप्शन देछि आ भितर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेल किए एतिके ऑप्शन भितर व्हिच ऑर्गेनेल आर कॉल्ड एज द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेल एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेल हम जानि छे दैट देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेट टू ईच अदर तांको भितर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेल सब किए गायत्री कोन हबो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेल की सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स बा गोल्गी बॉडी लाइसोसोम एंड वैक्यूल तो एई चारटा होचंती दैट इज कोन हमर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेल ताला आंसर कोन हबो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेल किए रितिका बी राइट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी लाइसोसोम वैक्यूल ताले एटी कोन अछि गोल्गी बॉडी दैट इज गोल्गी बॉडी इज द आमे कहि परिया एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेल एग्जांपल बढ़िया देन आमे कहि परिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हेल्पफुल टू फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस बा एक्टिव फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करे रे की फॉर्मेशन करे आरएनए सिंथेसिस रे की हेल्प करे को ऑर्गेनेल टा रिस्पांसिबल फॉर द आरएनए सिंथेसिस गोल्गी बॉडी स्वाति सी न्यूक्लियोलोस परफेक्ट सोयम एंड लिपिका बढ़िया दैट इज राइबोसोमल आरएनए और आरएनए सिंथेसिस करया पे हेल्पफुल होची न्यूक्लियोलोस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए इनटू ए बैक्टीरिया होस्ट इज नोन एज क्वेश्चन को पढ़ो बोल से एंड आसीबो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कोन हो अंकिता बढ़िया अच्छी कौन आंसर बी ट्रांसफॉर्मेशन राइट द आंसर इज ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कैन वी फाइंड फिलामेंट हुक बासल बॉडी आ भीतर को स्ट्रक्चर रे हमें फिलामेंट हुक बासल बॉडी तीनटा स्ट्रक्चर पाया एंड दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन आई थिंक प्रियंका रितिका फाइनली आंसर श्रद्धा की 252 वाचिंग पिला सब करेंट पळेले पिला पळेले पिला थिले केवल करेंट पे ना
ताले आंसर कोन हबो दैट इज फ्लैजेला परफेक्ट फ्लैजेला रो तीनटा पार्ट होची कोन ना फिलामेंट हुक बासल बॉडी देन मते क्वेश्चन को स्पर्म एंड ओवम या भितरु कहार मूवमेंट फ्लैजेलर मूवमेंट एंड कहार मूवमेंट सिलियरी मूवमेंट स्पर्म रो मूवमेंट फ्लैजेलर मूवमेंट और सिलियरी मूवमेंट एनीवन व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट स्पर्म डू दैट इज ciliary movement or flagellar movement ankita flagellar movement and in case of ovum the movement is ciliary movement right sperm is flagellar movement swam and then mate ko ए भितर को स्ट्रक्चर टा बैक्टीरिया को गोटे होस्ट बॉडी रे अटैचमेंट रे हेल्प करे हु इज स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज स्ट्रिक्टली रिस्पांसिबल टू अटैच द बैक्टीरिया इनटू द होस्ट बॉडी कोन आंसर गोटे होस्ट बॉडी रे को स्ट्रक्चर टा मोस्टली बैक्टीरिया को हेल्प करे टू अटैच इन द होस्ट बॉडी फ्लैजेला स्पर्म सिलिया कोटा को कि बैक्टीरिया को होस्ट बॉडी रे अटैचमेंट करे रे हेल्प करे Aksa Muskan Fimbriae right this is the perfect answer Fimbriae is the surface structure of the bacteria which is strictly helpful to attach the bacteria within the host body right then where is the cilia present in the human body cilia ta human body रे कोठी अछि and तुम strictly जानिचो that is हमर trachea जो रहिला trachea lined by the cilia एंड जहाँ भी हमें डस्ट पार्टिकल जिते नाक बाटे देखिए नौने कि दैट इज सिलिया प्रिवेंट करुच्ची एंड ऑल्सो सिलिया भी मिले दैट इज आमर कोठी ना इनसाइड द फालोपियन ट्यूब रे भी सिलिया अछि जे कि कोन करे ना सेकेंडरी ओसाइड को मूवमेंट करे हेल्प करे दैट इज सिलिया प्रेजेंट इन द ट्रैकिया एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन द फालोपियन ट्यूब राइट शुभलक्ष्मी फिम्ब्रिया सोर फिम्ब्रिया और सिलिया भितर डिफरेंट कोन सिलियाटा होची जनरली छोटो छोटो स्ट्रक्चर ओडा देखा जाय एंड जे देखिबा फ्लैजेला प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बट सिलिया प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक स्ट्रिक्टली यू हैव टू रिमेंबर फ्लैजेला प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बट सिलिया प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक एंड सिलियाटा छोटो छोटो स्ट्रक्चर ओडा किंतु फ्लैजेलाटा टिके बड़ स्ट्रक्चर हो चलो फ्लैजेला सिलिया फिम्ब्रिया सीडोपोडिया दैट इज फॉल्स फीड बा अमोइबा केस रे from the organism given below identify the predator आगे विद्रो किए होची predator on the epithelial cell of several internal organs such as lungs trachea digestive tract चलो ready voice आसुनी voice आसे कथा आसुची voice एबे ताले कोन हबो चलो आसुची ओके तो सबुठार भलो प्रेडेटर की आंक भितरे गायत्री साउंड पळैला भलो प्रेडेटर की हबो ताले ईगल ना फ्रॉग ना माउस ना पाइथन सौदामिनी कोन आंसर भलो प्रेडेटर ए ईगल माने केते ऊपर दूरे रे थाई की भी दैट इज जो कुकुडा छोटो छोटो छुआ न चिया छुआ गुडा को तो केते ऊपर थाई कि तांको नजर छोटो छोटो छुआ को पूरा आसीबे तो डायरेक्ट नेगिरी पळेबे वाजिन ईगल को गोटे छोटो सोरिसर दाना भी जदी पड़िथिबो ताको देखा जाए तो एते स्ट्रिक्टली तांको पावर विजन ता थाए तो मोस्ट प्रेडेटर ये एंड प्रेडेटर तो मोदी गोटे क्वेश्चन पचारि जीवो दैट इज प्रेडेटर केस रे बा प्रेडेशन केस रे प्लस माइनस ना माइनस माइनस ना प्लस प्लस ना माइनस माइनस प्रेडेशन केस रे कोन हबो फाइनली आंसर ए हबो श्रद्धा किटू ईगल राइट कोन हबो प्लस माइनस ना माइनस माइनस प्रेडेशन केस रे प्लस माइनस ना माइनस माइनस सर माय नेम इज प्रियांशी सौदामिनी ओके सौदामिनी प्रियांशी प्लस माइनस स्वाति स्निग्धा दैट इज प्लस माइनस एंड कमेंसलिज्म रे प्लस माइनस ना प्लस जीरो एनीवन समस्त प्लस माइनस रेडी कमेंसलिज्म
कमेंसलिज्म केस रे +0 ना माइनस माइनस ना -0 कोन आंसर कमेंसलिज्म रे +0 रघुनाथ रुबिसा शर्मिष्ठा परफेक्ट दैट इज कमेंसलिज्म +0 जनकर लाभ होतिबा आ जनकर नाइदर गेन नाइदर लॉस बा किछि लाभ होनतो किछि क्षति होनतो एंड द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द कमेंसलिज्म इज कोन दैट इज द कैटल इग्रेट एंड द ग्रेजिंग कैटल एंड एपिफाइट ग्रोइंग ऑन द मैंगो ट्री एंड व्हेल जेतबेले उठे ता धरे ब्रांकियल्स लागि थाए ब्रांकियल्स ऑन द व्हेल तिमी माछ जेतबेले पानी रे ऊपर उठुतिबो तमे देखि परबे डिस्कवरी विषय यूट्यूब रे दैट इज तापर छोट छोट ब्रांकियल्स लागि थांती तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म चलो नेक्स्ट the pleura are the membrane covering of lungs kidney brain heart pleura टा को organ रो outer covering सबु जाको तम आई थिंक 2022 रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 एंड 21 सो ई क्वेश्चन गुडा को सबु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड तमरो ओनली एंड ओनली OUT PY के क्वेश्चन कोन हो lungs राइट lungs for outer covering that is pleural membrane अच्छा मते को pleural membrane is single or double pleural membrane is single membrane or double membrane कोन हो 62 वाचिंग आउस पिला कोडा गले सोई पडिछन बोले सो pleural membrane is single membrane or double membrane कोन आंसर double membrane राइट तापर मते को during the inspiration आउथरे सुडो स्वयं my question is जेतबेले तमे इंस्पिरेशन करूछो बा जेतबेले एयर को इनटेक करूछो सेतबेले दीटा मसल रिस्पांसिबल फॉर द इंस्पिरेशन दैट इज द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड अनदर वन इज द डायफ्राम तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जेतबेले कॉन्ट्रैक्ट हबो को डायरेक्शन रे वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर को इंक्रीज करिवो कोन हबो तमे ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को डायरेक्शन रे वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर को इंक्रीज करिवो कोन आंसर dorsoventral axis रे ना anterior posterior axis रे when the external intercostal muscle contract volume of thoracic chamber increase in the axis of dorsoventral or anterior posterior axis Raghunath dorsoventral DV perfect then in the second question diaphragm रो shape dome shape केते बेले contraction बेले dome shape और relaxation बेले dome shape माने छत्ता shape that is the diaphragm is the muscle which is lower side रे बा that is longs to lower part रो जोटा की कवर करची तो सेटा dome shape केते बेले contraction बेले ना relaxation बेले contraction बेले dome shape जदि जनरली हमें देखिबा lungs रो structure suppose this is the structure and dome shape diaphragm एटा होची relaxed stage रे contraction बेले जनरली एटा flat हे जीवो अंकिता relaxed DR मन रखिबला डॉक्टर बा दैट इज D फॉर होची डोम शेप R फॉर होची रिलैक्स तो रिलैक्स स्टेज बेले दिस इज द डोम शेप एंड कंट्रैक्शन बेले दिस इज द फ्लैट शेप देन व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम एनीवन जस्ट शॉर्ट रे गो खाली टाइडल वॉल्यूम कोन टिके खाली कमेंट करो एंड बुझी जी व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम शुभलक्ष्मी सरोज सूरज अंकिता टाइडल वॉल्यूम कोन व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम Subhalakshmi, Anusha, what is tidal volume? Volume of air person can inspire and expire during the normal respiration. Normal तमे तळे बसी के कथा दाउछ चा फा पिउछ बिस्कुट बिस्कुट पिउछ आईपीएल विषय कथा दाउछ तो एई टाइम रे during the normal respiration बारे तळे normal टाइम रे normal physiology करछ तो से टाइम रे जति वॉल्यूम ऑफ एयर तमे नउछ एंड छाडुछ दैट इज कॉल्ड एज tidal volume and amount of air move in and out during the normal respiration normal time रे जति के एयर तमे नउछ एंड इनटेक करछ एंड एक्सेल करछ दैट इज कॉल्ड एज tidal volume normal respiration perfect बढ़िया देन मते को respiratory rhythm center बा respiratory rhythm center बा respiration को regulate करथिबा center present in the medulla oblongata or pons in which area that is the respiratory rhythm center is located respiratory rhythm center is located in the medulla oblongata or the pons area कोन आंसर बढ़िया द amount of air पायल रघुनाथ awesome answer medulla oblongata right medulla oblongata the generally respiratory rhythm center which is located in the medulla oblongata then already hame previous class रे भी करथिले hunger area thirst area and satisfactory center and oxytocin vasopressin these hormones are regulation हुए and hunger area thirst area ये सब जाको
कोड रिलीज हुए हाइपोथैलेमस ना मेडुला ऑब्लिंगेटा दुर्गेश रुबिसा मेडुला ऑब्लिंगेटा सेकंड क्वेश्चन का सो कि सैटाइटी सेंटर हंगर सेंटर भोक लागिबा शोष लागिबा सैटिस्फैक्शन होबा ऑक्सीटोसिन रिलीज करिया भासोप्रेसिन रिलीज करिया ये सब कहार फंक्शन ऑक्सीटोसिन कौन हम हाइपोथैलेमस चलो हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड देन मते को नोटोकॉर्ड एंड द वर्टिब्रल कॉलम तुमको यदि क्वेश्चन पचारि जीवो दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम टा नर्व कॉर्ड रो ओरिजिनेट हेची बा नोटोकॉर्ड रो ओरिजिनेट हेची ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास रे करचे वर्टिब्रल कॉलम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नर्व कॉर्ड और फ्रॉम द नोटोकॉर्ड कौन हबो रुबिसा वर्टिब्रल कॉलम is originated from the notochord or from the nerve cord कौन अब आंसर एक्सक्यूज मी फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री पीवाईके सीजन हबो कि नहीं 100% हबो श्री श्रेयादीप हबो 100% हबो नहीं कहीं चलो दैट इज नोटोकॉर्ड परफेक्ट देन मते को हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रल कॉलम रे केतेटा हाड़ अछि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रल कॉलम रो हाड़ कहउतिबा लोको को एक सुंदर आकर्षणीय पुरस्कार दिया हो एंड से पुरस्कार देबे हमर पिंकू भाई द मोस्ट यूनिक एंड द मोस्ट हैंडसम एंड द मोस्ट वर्किंग बॉय दैट इज पिंकू भाई देबे ताकू पुरस्कार कोन हबो 26 राइट सर मते टिके कहिबे कि सबुठारु इंजीनियरिंग रे भलो कॉलेज कोटा ओडिसा भीतर एइटी कोन कहबा कोन अछि चलो ताले कोन हला 26 वर्टिब्रल कॉलम रे देन हाउ मेनी री बोन्स आर देयर ग्रेसफुल गसिप मु तम मेसेज पढिली एंड डोंट वरी ए विषय में डिस्कशन करिया हला कॉलेज वगैरह विषय श्रद्धा किटू एस आर सत कथा कहिसंती ओके कहबा ठीक अछि डोंट वरी तो मु कहली कोन ना दैट इज द रिब्स रे तमरे केतेटा बोन अछि जनरली हमें जो देखिबा रिब्स रे केते पेयर बोन 11 पेयर 10 पेयर ना 12 पेयर कोन हबो 24 by 12 पेयर बस हाँ गैस्ट्रिन सिक्रेटिन एंड सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन these hormones are secreted from alimentary canal or from the liver or from the kidney gastrin secretin CCK these are the hormone which are secreted from alimentary canal or from the liver or from the kidney or from the any other organs kon of answer 12 pair perfect that is the ribs are 12 pairs 71 watching and our target अछि 100 so देखा जाओ 100 पहुंचु जे कि 71 रो खसी की 20 बंदा होछि तो कौन हबो लिवर गैस्ट्रिन सिक्रेटिन सीसीके these are secreted from the alimentary canal right then which is the largest gland of our body हम बॉडी रो सबठारो लार्जेस्ट ग्लैंड कोटा alimentary गैस्ट्रिन कोटा का रिलीज होची जी सेल ऑफ द स्टोमक और ड्यूडेनम एंड सिक्रेटिन ये सब alimentary canal रो ही रिलीज होची गैस्ट्रिन सिक्रेटिन एंड सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन ए हार्मोन कोटा का एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड ए मन सब then largest gland that is the liver okay then which is the called as the heterocrine gland बा जहा को हमें कहि परा मिक्सोट्रोपिक ग्लैंड which gland is called as the heterocrine gland or the mixotropic gland voice of krishna शर्मिष्ठा सौदामिन राधा माधव जय प्रभु राधा माधव लिपिका largest gland liver sorry alimentary canal पायल इट्स ओके शुभ लक्ष्मी अर्चिता दुर्गेश गायत्री pancreas okay then hepatopancreatic duct open into the duodenum and seti regulated hochi gote sphincter taku regulate kurchi and the name of the sphincter again I am saying the question hepatopancreatic duct open into the duodenum and gote sphincter seti regulate kurchi and the name of the sphincter is pyloric sphincter cardiac sphincter or sphincter of Fodi kon hobo pyloric na cardiac na sphincter of Fodi hepatopancreatic duct is regulated by a sphincter which the sphincter the name of the sphincter is cardiac sphincter or and pyloric sphincter na that is sphincter of Odai kon hobo ha ha radha madhav cardiac sphincter
कार्डियक स्फिंक्टर दैट इज तुम जो खाइबाटा गिळुच इसोफेगस रु स्टोमक रो फर्स्ट पार्ट दैट इज द कार्डियक तो ता मझिरे जो जंक्शन अछि बा ता मझिरे जो स्फिंक्टर अछि दैट इज कार्डियक स्फिंक्टर बट द आंसर इज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई परफेक्ट स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो माने कहछन्ते ताको पई गोटे जोरदार करताली दैट इज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई यू हैव टू रिमेंबर स्ट्रिक्टली पाइलोरिक स्फिंक्टर दैट इज स्टोमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन by cardiac fundic pyloric these are the part of stomach and the duodenum jejunum ileum the pyloric sphincter टा stomach रो small intestine भितर कहि पिरा ठीक अछि sphincter of ओडाई then मते को the glucagon is released from which cell of pancreas glucagon is released from which cell of pancreas alpha cell beta cell or delta cell from which cell that is glucagon is released on answer from which cell that is the glucagon is released कौन आंसर कारो अल्फा सेल ग्लूकागन बीटा सेल इंसुलिन अल्फा सेल सार्थक स्ट्रिक्टली मन रखबा अल्फा सेल पैनक्रियाज रे जनरली हमें कहबा दैट इज द exocrine part is there suppose I am the pancreas and my left hand is suppose this is the exocrine and this is the endocrine so exocrine part release karibo enzyme and the endocrine part release karibo hormone and more endocrine part रे generally तीनटा सेल alpha cell beta cell delta cell alpha cell release करियो glucagon beta cell release करियो insulin and delta cell somatostatin चलो alpha next okay then मते को adrenaline epinephrine or norepinephrine adrenaline or noradrenaline these hormones are released from adrenal gland pituitary gland pineal gland parathyroid gland कोन हबो कान्हा परफेक्ट अल्फा सेल कोन हबो को बढ़िया अछि स्वयं adrenal gland बस adrenal रो दीटा पोर्शन one is cortex and another one is medulla then medulla part रो रिलीज होबा adrenaline तापर मो क्वेश्चन होची दैट इज गैरेज ऑफ टी लिपोसाइट बा टी लिपोसाइट रो मैच्योरेशन कोठ हुए बोन मेरो ना थाइमस व्हिच इज कॉल्ड एज द मैच्योरेशन पार्ट ऑफ द or maturation site of the T lymphocyte bone marrow or thymus कोठी that is T lymphocyte रो maturation हुए thymus बढ़िया then चलो क्वेश्चन नंबर आ गोटे को आ भितरु that is ANF is released from lungs kidney brain heart ANF कोठ रिलीज हुए life of Kiran स्वाति स्निग्धा अर्चिता अक्सा लाइफ ऑफ किरण रुबीसा दुर्गेश हॉट राइट दैट इज हार्ट डोंट हर्ट तो हमको हॉट करनी चलो सो दैट इज हार्ट रो वाल रो रिलीज हुए एएनएफ आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर देन मते को किडनी रो रिलीज होला अच्छा मते को आ भितरु लंग्स को जदि हम कहया लंग्स इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन भला काम करि परिबो या काम करि परिबोनी लंग्स को हम गोटे एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहि परियनी बिकॉज़ लंग्स तो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करछि एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट फॉर आवर सेल सो दैट लंग्स भी हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोली कहि पाए देन मते नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रीवियस क्लास रे हम करथिले mammary gland is the modification of which gland sweat gland or sebaceous gland mammary gland is the modification of which gland स्वयं कहि परिया दैट इज काहे ना लंग्स भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे हेल्प करछि तो my question is mammary gland is the modification of which gland sweat gland or sebaceous gland sweat gland perfect that is the sweat gland रो modification होची mammary gland then हमें पढितले मन अछि that is poison बा snake मानकर जो poisonous gland रहला तो poisonous gland of the snake are modified gland of which gland को gland रो modified saliva ना sweat ना sebaceous कोन आंसर poisonous gland snake मानकर salivary gland snake मानकर poisonous टा होची salivary gland perfect आ mammary gland टा होची sweat gland then how many salivary gland are there in human body by in human case रे केतेटा salivary gland not केते pair केतेटा salivary gland होची in case of human beings how many salivary glands are there in the human mouth or salivary gland केते that is the 3 pair or that is 6 then मते को voice box
voice box or a larynx is present on the opening of the windpipe or present on the opening of the food pipe. कोटी that is the voice box ର location windpipe ର opening रे ना food pipe ର opening रे. Life of Kiran, Radha Madhav, Aksa और शाहीन, रितिका, मितु, सौदामिनी, संजय, लिपिका. पिलांको ना न पढ़िले पिला कहउछन सर आपण ना काई पढुना एंड बहुत सारा ना पढ़िले पिला कहउछन सर एते ना टिके पढ़ि दउछन जे आ मो नाटा स्किप हे गला की कहउछन सर एते ना पढ़ि दउछन जे आमे तो परे रिकॉर्डिंग वीडियो देखुछु तो हमको टिके प्रॉब्लम होउची सो दैट ना पढ़िया तो पढ़िबो टिके टिके मझरे नॉल दैट इज पिला मानको भी बोर हे जिवे 3 पेयर ऑफ salivary gland as well as 100 of minor salivary gland ready. That is windpipe. But trachea ର opening रे there is a structure ଆମେ जा कहउछे larynx बा that is called as amaro voice box. Okay. Shraddha Kitu. Then next question. Vermiform appendix or it is a vestigial organ. Vermiform appendix present in the cecum site or colon or rectum. In which site of the large intestine the vermiform appendix is located? कौन आंसर? Life of Kiran. कौन आंसर को? बढ़िया क्वेश्चन. पिनियल ग्लैंड में मेलाटोनिन रिलीज करे. Melatonin, that is a 24-hour diurnal hormone. Cecum. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 पर कौन अछि बहुत सारा क्वेश्चन हे गला. ए न्यूक्लियोटाइड इज बढ़िया क्वेश्चन. न्यूक्लियोटाइड काहा को नै करी नाइट्रोजनस बेस पेंटोस सुगर और फॉस्फेट ग्रुप काहा को न्यूक्लियोटाइड ता कार कार कॉम्बिनेशन कोन हबो समझ पानी डोंट वरी बढ़िया हो एग्जाम एंड पॉजिटिव रहो दैट इज जो माने अप 2024 पे माने जो हम माने जोड़ी होचे एवरी इवनिंग रे सो पॉजिटिव वाइब रखो सबोड पे एंड 100% एग्जाम भलो हो तो नेगेटिव थॉट आनिले नेगेटिव थॉट आसीबो तो एवरी जिंस रे हम पॉजिटिव जिंस रखिया पड़िबो सो डोंट वरी दैट इज आउ केतेटा क्वेश्चन श्रद्धा केटू तमर ऑलरेडी क्लास अछि मु जानि छी तो क्वेश्चन आई थिंक या परटा होचे लास्ट क्वेश्चन नाइट्रोजनस बेस पेंटोस सुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप एटा को हमें कहिया दैट इज द न्यूक्लियोटाइड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डायटम. डायटम को नेकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोन कोन आंसर. माय ब्लड ग्रुप आल्सो बी पॉजिटिव. सर केमिस्ट्री पे कौन फॉलो कले देखो केमिस्ट्री पे फॉलो कले कौन सर तो केमिस्ट्री पढौछथि तो आई थिंक सर गोटे पचार देले बोधे बेटर हबो जेतोले सर को केमिस्ट्री क्लास होची टिके पचार दो आई थिंक बेटरमेंट हबो तो आंसर कौन हबो diatom are the most important producer of the ocean perfect diatom are the membranous of the dinoflagellates whole diatom and desmid are the example of cryophytes and cryophytes are under the protista protista को हमें ग्रुपिज्म करछे cryophytes dinoflagellates euglenoid slime and protozoan तो एटा होची एग्जांपल ऑफ cryophytes dinoflagellates wall are indestructible हम जानि छे that is made up of silica and they can be found in both phase तो आंसर होची कोटा इनकरेक्ट पछे एटा हो देन होची ये रहिला तमरो यू आर द बेस्ट वर्ल्ड प्रभु दिकु यादव रक्षा करो आई एम नॉट द गॉड. चलो बायो पई कोन फॉलो अप करियो बायो पई तम फॉलो अप करो देखो फर्स्ट कथा हम जो पीओए के क्वेश्चन लगोची तो तम समय एथरू एनालिसिस करी जानि परथिबो कि क्वेश्चन रो लेवल केमति पडुची तो बेसिकली तमे ट्राई करो एबे जेहे तमरा रहिलानी एग्जाम मासे गुडा रहिला तो तमे ट्राई करी कि सब चैप्टर को टच अप करिया पई कोनसी चैप्टर स्किप करनी कंप्लीटली तमे लिविंग वर्ल्ड रो स्टार्ट करो पूरा जाई कि पहुंचो हार्मोन चैप्टर 11 रो लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम दैट इज मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ह्यूमन फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी टिके दैट इज टिके ओवरलुक करी करी चला चैप्टर रे कोन अछि एंड वन शॉट भी तमे टाइप रे देखि कि भी सरी परिबो देन रहला 12 कथा 12 रो रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म रो पूरा इकोलॉजी पन तो टिके ओवरलुक करी के चलो एमते नाही कि मु कहूची कि चैप्टर रो तम डेप्थ नॉलेज आनी दियो बोली ए कम टाइम रे डेप्थ नॉलेज आनिया इंपॉसिबल
बट सरफेस रु तुमको चैप्टर रे कोन अछि एंड चैप्टर रे कोन कोन जिंस अछि से विषय जदी आईडिया थिबो तुम क्वेश्चन को टैकल कर दो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर ऊपर आनत क्वेश्चन ठीक अछि हमें नेक्स्ट क्लास रे एई प्रीवियस क्वेश्चन आनिया तापर हमें आनिया बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर सो डोंट वरी जहां भी तुमरो इच्छा सही अनुसार हमें क्वेश्चन आनिया एंड आउ भी चैप्टर रहिला बायोटेक्नोलॉजी रे एप्लीकेशन चैप्टर तार भी क्वेश्चन आसीबो एंड आल्सो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर आसीबो एनिमल टिश्यू ऊपर आसीबो देन हमर मसल कंट्रैक्शन जो चैप्टर रहिला दैट इज ता ऊपर भी क्वेश्चन आसीबो एंड सब एनालिसिस करके दैट इज प्रीवियस क्वेश्चन को हमें डिस्कशन करिया ठीक अछि तो डोंट वरी तो तुमको लास्ट पांचटा क्वेश्चन पचारछि हमरो दैट इज मु जेते बडी तुमर लाइव सेशन करे तो पांचटा क्वेश्चन हमर लास्ट पचारिया तो फर्स्ट क्वेश्चन जदी पचारिया which is the milk production hormone and which is the milk ejaculation hormone फटाफट को पांचटा क्वेश्चन धड़ार सारिया सर यू आर द ग्रेट प्लीज आई एम नॉट द गॉड राधा माधव दैट इज तुम मानकर भल पाए एटा गॉड बोलिया किछि जिंस नाही हम माने समस्त मनीष तमे भी मनीष आमे भी मनीष सब मनीष गॉड बोली किछि नाही सर सब पिलांक सिलेक्शन है सब पिलांक तो सिलेक्शन होबनी को भी एग्जाम रे तुम जानिछो सब पिलांक तो सिलेक्शन होएनी ओके ताले कोन होबो आंसर मिल्क प्रोडक्शन ପାଇଁ that is the prolactin and the milk ejaculation ପାଇଁ that is the oxytocin then second question that is what is emphysema टिके वीडियो लाग होची की what is emphysema milk producing hormone prolactin what is emphysema तीटा क्वेश्चन हला emphysema कोन राधा माधव थैंक यू सो मच what is emphysema due to the cigarette smoking the alveolar of the surface of the alveolar get decreased that is called as emphysema ठीक अछि सिलेक्शन केमती हुए ऑलरेडी तुम जानि छ दैट इज तुमरो मार्क रो परसेंटाइल कैलकुलेशन करा जिवो एंड तुमरो 11th एंड सॉरी तुमरो प्लस 2 एंड तुमरो 10th रो 25% पीसीएम एंड पीसीबी रो मार्क को कैलकुलेट करा जिवो तार 25% एंड आल्सो तुमरो जति मार्क रखिथिबो ओयूटी रे तार परसेंटाइल ऑलरेडी हमरो वीडियो भी अछि आई थिंक आकु देखि तुम देखि परिबो चलो reducing of alveolar wall due to the cigarette smoking then that is जदि हम कहिया inflammation of bronchi is called as asthma is inflammation of bronchi and bronchioles called as asthma then जदि देखिया next होची EcoR1 is a restriction enzyme which is produced from the bacteria name EcoR1 को bacteria produce होची EcoR1 is a restriction enzyme which is produced from the bacteria कोन हबो धड़ धड़ को EcoR1 is the restriction enzyme which is produced from the bacteria. No negative mark. That is Escherichia coli. And the first restriction enzyme कोटा Hint2. Hint2 is the first restriction enzyme. Then मते को that is who is the father of genetic engineering? Who is the father of genetic engineering? Orjita Sahu, Escherichia coli, Perfect, Rubisa, Lipica, Escherichia coli. Who is the father of genetic engineering? धड़ा धड़ को सारिया. अब लास्ट गोटे क्वेश्चन पचरा हबो देन क्लास को सारिया नेक्स्ट क्लास रे परफेक्टली करिया फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जस्मिन सिक्की हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग लाइफ ऑफ पॉल वर्क लिपिका परफेक्ट दैट इज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नो दैट इज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल वर्क ठीक अछि पॉल वर्क ठीक अछि चलो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट देथिले स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बा स्पीसीज और एरिया भीतर रिलेशनशिप देथिले तो चलो ये रहला तमरो क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास रे हम पीवाई के क्वेश्चन आनी आसीबा एंड जो चैप्टर उडा तमरो डिमांड अछि से चैप्टर करिया तो चलो हैव ए नाइस नाइट एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू कि तुम एते टाइम देके जॉइन करछो एंड आई थिंक तुमको फ्रूटफुल लागिथिबो क्वेश्चन गुडा को ओके थैंक यू संजय सिक्की एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू जय जगन्नाथ जय श्री राम चलो